In the bustling town of Greydrift, where rooftops leaned close like gossiping neighbors and alleyways twisted like secrets, lived a quiet boy named Elias. Greydrift के मसरूफ शहर में, जहां छतें एक दूसरे के करीब झकी हुई थीं, जैसे चगलखोर हमसाए, और गलियां राजों की तरह मरती थीं, एक खामोश लड़का एलियास रहता था. He wasn't particularly tall or strong, but he had one thing no one else did: a fascination with shadows. वो ना तो खास तौर पर लंबा था और ना ही ताकतवर, लेकिन इसके पास एक चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी: सायों से दिलचस्पी. Every evening, while others closed their shutters and lit candles against the dark, Elias wandered into the oldest part of town, the Forgotten Square. हर शाम जब बाकी लोग अपनी खिड़कियां बंद करके अंधेरे के खिलाफ मोमबत्तियां जलाते, एलियास शहर के सबसे पुराने हिस्से की तरफ चला जाता, भूला बसरा चौक. It was a cobblestone plaza surrounded by abandoned buildings, where the wind whistled through broken windows and pigeons roosted like silent sentinels. ये एक पथरीला मैदान था जो पुरानी वीरान इमारतों से घरा हुआ था, जहां टूटी हुई खिड़कियों से हुआ सीटी बजाती थी और कबूतर खामोश मुहाफिजों की तरह बैठे होते थे. But Elias came not for the architecture or the quiet. लेकिन एलियास ना तो इमारतों के लिए आता था और ना ही खामोशी के लिए. He came for the puppet show. वो कठपुतलियों का तमाशा देखने आता था. It had no stage, no audience, and no puppeteer. इसका कोई स्टेज, नाजरीन या कठपुतली नचाने वाला नहीं था. Only a canvas screen and strange, dancing shadows that appeared once the moon rose high enough. बस एक कपड़े की स्क्रीन और अजीब नाचते हुए साए होते थे जो चांद के काफी बुलंद होने पर नजर आते थे. No one believed Elias when he spoke of them. जब एलियास इनके बारे में बात करता तो कोई इस पर यकीन नहीं करता था. They said he had an overactive imagination, that he was delusional. लोग कहते कि इसकी तखील बहुत ज्यादा है, वो वहम का शिकार है. But every night, the silhouettes twirled and acted out dramas that seemed too precise to be mere coincidence. लेकिन हर रात ये साए घूमते और ऐसे ड्रामे दिखाते जो महज इत्तेफाक से कहीं ज्यादा दुरुस्त लगते. One night, the shadow show changed. एक रात सायों का तमाशा बदल गया. Instead of the usual folklore and fairy tales, the puppets depicted a cryptic story. One of a boy with a lantern, a staircase beneath a fountain, and a sealed door with 7 iron keys. रवायती लोक कहानियों और परियों की कहानियों के बजाय कठपुतलियों ने एक पुरस्कार कहानी दिखाई. एक लड़के की जिसके पास एक लालटीन थी, एक फवारे के नीचे सीढ़ियां थीं और एक बंद दरवाजा था जिसमें 7 लोहे की चाबियां थीं. Elias watched, entranced, as the shadow boy held up a parchment marked with a strange emblem, a spiral inside an eye. Elias मसहूर होकर देखता रहा जब साया लड़के ने एक पर्ची उठाई जिस पर एक अजीब सा निशान था, आंख के अंदर एक दायरवी शक्ल. The next morning, Elias returned to the square in daylight. अगली सुबह, Elias दिन के वक्त फिर चौंक आया. He stood in front of the crumbling fountain, heart pounding. वो टूटे हुए फवारे के सामने खड़ा हुआ. उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था. With hesitant hands, he reached beneath the mossy rim and felt something. झिझकते हाथों से इसने काई लगी हुई किनारे के नीचे हाथ डाला और कुछ महसूस किया. A latch, एक कुंडी. It creaked open, revealing a spiral staircase spiraling into darkness. वो चरचराती हुई खुल गई और नीचे अंधेरे में जाती हुई एक दायरवी सीढ़ी जाहिर हुई. Inside, the air was thick with dust and silence. अंदर की फजा गर्द-ओ-गुबार और खामोशी से भरी हुई थी. His footsteps echoed down the tunnel as he descended, following flickers of phosphorescent moss that glowed faintly on the stone walls. जब वो नीचे उतरा, इसके कदमों की आवाज गूंजती रही और वो रोशनी देती हुई चमकदार काई के हल्के हल्के जगमगाते निशानात को पथरीली दीवारों पर देखता रहा. After what felt like hours, he arrived at a vaulted chamber filled with 7 pedestals, each with a puzzle box on top. काफी देर के बाद वो एक मेहराबी कमरे में पहुंचा जो 7 सतूनों से भरा हुआ था.
हर एक पर एक पहेली वाला डब्बा रखा हुआ था. The boxes required not strength but ingenuity. इन डब्बों को खोलने के लिए ताकत नहीं बल्कि ज़हानत की ज़रूरत थी. One had to be rotated in a precise pattern. Another needed a riddle solved aloud. A third required arranging colored stones to match a sequence from the puppet show. एक को एक खास तरतीब से घुमाना था, दूसरे की पहेली बुलंद आवाज में हल करना थी, तीसरे में रंगीन पत्थरों को इस तरतीब से रखना था जो कठपुतलियों के तमाशे में देखी थी. One by one, Elias opened them, retrieving rusted iron keys. एलियास ने एक एक करके वो सब खोले और जिंग आलूद लोहे की चाबियां निकालें. When the seventh clicked free, the ground trembled. जब सातवीं चाबी निकली तो जमीन लर्जने लगी. A hidden wall retracted, revealing a chamber bathed in violet light. एक छुपी हुई दीवार पीछे हट गई और एक कमरा सामने आया जो बनफशी रोशनी में नहाया हुआ था. In the center stood a massive shadow puppet, its wooden limbs strung by invisible threads. दरमियान में एक द्यूकामत साया कठपतली खड़ी थी. उसके लकड़ी के आज़ा पोशीदा धागों से बंधे हुए थे. But it didn't dance. लेकिन वो नाचती नहीं थी. It stared directly at Elias. वो सीधा एलियास को घूर रही थी. I've been waiting, said a voice. Not out loud, but inside his mind. मैं इंतजार कर रहा था, एक आवाज ने कहा, जो बुलंद आवाज में नहीं, बल्कि इसके जहन में आई. You were in the shows, Elias whispered, clutching the keys. तुम इन तमाशों में थे, एलियास ने सरगोशी की चाबियां पकड़ते हुए. I am what was left behind, the puppet said. A fragment of an ancient story sealed away by those who feared what they didn't understand. मैं वो हूं जो पीछे रह गया, कठपुतली ने कहा. एक कदीम कहानी का टकरा जिसे इन लोगों ने कैद कर दिया जो अनजान चीजों से डरते थे. Elias felt no fear, only curiosity. Why show me? एलियास को कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, बस तजस्सुस. मुझे क्यों दिखाया? Because stories die without listeners, and now you are the keeper. क्योंकि कहानियां सुनने वालों के बगैर मर जाती हैं, और अब तुम निगहबान हो. The puppet raised its hand, and the chamber exploded in shadow. कठपुतली ने अपना हाथ बुलंद किया और कमरा सायों से भर गया. When Elias awoke, he was back in the square. The sun was rising. जब एलियास जागा, वो फिर चौक में था. सूरज तलू हो रहा था. But now, whenever he walked by windows or walls, shadows whispered. लेकिन अब जब भी वो खिड़कियों या दीवारों के पास से गुजरता, साए सरगोशी करते. They told tales in flickers. वो झमाकों में कहानियां सुनाते. They warned of forgotten kings and sleeping spells, of cities made of glass and beasts made of ink. वो भूले बादशाहों और नींद की जादुई तावीज़ों, शीशे के शहरों और स्याही के आफरियतों की खबरें देते. Elias had become more than a boy. Elias सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था. He had become the storyteller of shadows. वो सायों का कहानी गो बन चुका था. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें. इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the bustling town of Greydrift, where rooftops leaned close like gossiping neighbors and alleyways twisted like secrets, lived a quiet boy named Elias. He wasn't particularly tall or strong, but he had one thing no one else did, a fascination with shadows. Every evening, while others closed their shutters and lit candles against the dark, Elias wandered into the oldest part of town, the Forgotten Square. It was a cobblestone plaza surrounded by abandoned buildings where the wind whistled through broken windows and pigeons roosted like silent sentinels. But Elias came not for the architecture or the quiet. He came for the puppet show. It had no stage, no audience, and no puppeteer. Only a canvas screen and strange dancing shadows that appeared once the moon rose high enough. No one believed Elias when he spoke of them. They said he had an overactive imagination, that he was delusional. But every night, the silhouettes twirled and acted out dramas that seemed too precise to be mere coincidence. One night, the shadow show changed. Instead of the usual folklore and fairy tales, the puppets depicted a cryptic story, one of a boy with a lantern, a staircase beneath a fountain,
and a sealed door with 7 iron keys. Elias watched, entranced, as the shadow boy held up a parchment marked with a strange emblem, a spiral inside an eye. The next morning, Elias returned to the square in daylight. He stood in front of the crumbling fountain, heart pounding. With hesitant hands, he reached beneath the mossy rim and felt something. A latch. It creaked open, revealing a spiral staircase spiraling into darkness. Inside, the air was thick with dust and silence. His footsteps echoed down the tunnel as he descended, following flickers of phosphorescent moss that glowed faintly on the stone walls. After what felt like hours, he arrived at a vaulted chamber filled with 7 pedestals, each with a puzzle box on top. The boxes required not strength, but ingenuity. One had to be rotated in a precise pattern, another needed a riddle solved aloud, a third required arranging colored stones to match a sequence from the puppet show. One by one, Elias opened them, retrieving rusted iron keys. When the 7th clicked free, the ground trembled. A hidden wall retracted, revealing a chamber bathed in violet light. In the center stood a massive shadow puppet, its wooden limbs strung by invisible threads. But it didn't dance. It stared directly at Elias. "I've been waiting," said a voice, not out loud, but inside his mind. "You were in the shows," Elias whispered, clutching the keys. "I am what was left behind," the puppet said. A fragment of an ancient story, sealed away by those who feared what they didn't understand. Elias felt no fear, only curiosity. Why show me? Because stories die without listeners, and now you are the keeper. The puppet raised its hand and the chamber exploded in shadow. When Elias awoke, he was back in the square. The sun was rising, but now, whenever he walked by windows or walls, shadows whispered. They told tales and flickers. They warned of forgotten kings and sleeping spells, of cities made of glass and beasts made of ink. Elias had become more than a boy. He had become the storyteller of shadows. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी साथी बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।